Have you ever looked at your reflection in a spoon? You know how on one side it's upside down, but on the other it's right side up? Well, that's not just a weird quirk. It's actually some really cool physics at play. Today, we're going to dive into exactly that, the science of spherical mirrors. And it really all boils down to this question, right? A makeup mirror and a car's side mirror are basically the same thing. They're just curved pieces of glass. So how on earth do they give you such completely different results? Well, the answer is this really elegant piece of everyday physics, and by the end of this, you're going to get it. You'll see exactly how they bend light to literally shape what you see. All right, so to crack this mystery, we first need to meet the two main characters in our story. Now, they're related, but trust me, they have totally different personalities when it comes to dealing with light. So first up, we've got the concave mirror. This one curves inward, like the inside of a cave. That's a super easy way to remember it. Its whole job is to gather, or converge, light rays. Then you've got its opposite, the convex mirror, which bulges outward. And its job is, you guessed it, the exact opposite. It spreads, or diverges light. Think about it like this. Picture a giant hollow glass ball. If you slice a piece off and you polish the inside to make it shiny, bam, you've got a concave mirror. But if you polish the outside, you get a convex mirror. And that one simple difference in geometry, it's the key to absolutely everything that's about to happen. So how do we actually predict what these mirrors are going to do with light? Well, to really understand what's going on, we just need to get a handle on a couple of key terms. Think of them as the rules of the road for how light reflects. First up is something called the center of curvature, which we label with a C. This is just the center point of that original imaginary sphere we sliced our mirror from. You can think of it as the geometric heart of the curve. Simple as that. Okay, next up, and this one is absolutely critical, is the principal focus, or just F. This is the mirror's action point. It's the one spot where a mirror sends all the parallel rays of light that hit it, like light from the sun. But how it sends them there? Well, that's where our two mirror personalities really start to show. A concave mirror is a collector, right? So when parallel light rays smack into its surface, it bounces them all inward so they meet at one single sharp point. That's the principal focus. And because those light rays actually meet up there in the real world, we call it a real focus. You could literally hold a piece of paper right at that spot and see a tiny, bright dot of light. Now the convex mirror, it does the complete opposite. It takes those same parallel rays and just scatters them outward. They never ever actually meet in the real world. So where's the focus? Well, our brains are smart and they instinctively trace these scattered rays backwards in a straight line to a point behind the mirror where they look like they're coming from. We call this a virtual focus because the light isn't really there. It's an illusion. All right, now for the main event. We're going to take an object, let's say a candle, and we're going to go on a journey, moving it closer and closer to a concave mirror. I want you to watch how its reflection, what we call its image, totally transforms at each step. We're going to start with our object super far away, at what physicists call infinity. The light rays coming from it are pretty much parallel by the time they get to us. So the mirror does what it does best. It gathers all of them into a tiny, upside-down image right at the focal point, F. Okay, now we start bringing the object closer, but we'll keep it beyond that center of curvature, C. And look what happens. The image is still upside down, and it's still real, but it's moved a bit away from the focus, and it's gotten a little bigger, though it's still smaller than the actual object. And now we've hit a really special spot, the center of curvature itself, point C. When you put the object right here, the image forms right here too. And for this one perfect moment, the image is the exact same size as the object. It's a perfect copy, just, flipped upside down. And this is where the real magic starts. The second we move our object inside of C, the whole game flips. For the very first time, the image becomes magnified. It's actually bigger than the object. It's still a real upside-down image, but now it's being projected way farther away. So what do you think happens if we put the object right on the focal point F? Well, the reflected light rays shoot out perfectly parallel to each other. And since they never meet up, a focused image never forms. The image basically just disappears. It gets beamed out to infinity. It's a really cool kind of weird effect. And for our final stop, we move the object inside the focal length, right up close to the mirror. And poof, everything changes. The image flips right side up, it gets big and magnified, and it now looks like it's behind the mirror. It's a virtual image.
And this right here is the secret of the makeup mirror. So let's just recap that wild ride. The concave mirror can take an object and shrink it down to a dot, reflect it upside down at its actual size, or make it look huge. And depending on how close you get, that huge image could be upside down in real or right side up in virtual. It's this incredible versatility that makes it so darn useful. You know, after all that complexity, the convex mirror is actually a huge relief. It's so simple. Where the concave mirror is this versatile shapeshifter, the convex mirror is totally predictable. It does one thing, and it does it every single time, no exceptions. And this is it. I mean, it does not matter where you put an object in front of a convex mirror. Far away, up close, somewhere in between, makes no difference at all. The image will always be virtual, it will always be upright, and it will always be smaller than the object. Every single time. Okay, so let's bring it all home. Let's connect this theory back to our original question and see these two very different mirrors out there working in the real world. Remember that magnified, upright, virtual image we got from the concave mirror? That's your makeup mirror letting you see your face up close. But take that same mirror's ability to gather light to a single point, reverse it, and you get a car headlight that projects a powerful beam of light. And the convex mirror's predictable talent for shrinking the world into a wide, upright view? Well, that's exactly what you need for a car's side view mirror, giving you that huge field of vision. Now, drawing all those lines and rays is a great way to see what's going on, but physicists have an even better tool, a shortcut. It's a single, powerful piece of math that has all the rules we just talked about baked right into it. It's called the Mirror formula, and it is basically the source code for how spherical mirrors work. This beautiful little equation connects the mirror's fixed focal length with the distance of any object you put in front of it. And with a bit of simple math, you can calculate exactly where the image is going to show up and how big it's going to be, all without drawing a single line. It's the physics that predicts the picture. So the next time you glance in your side view mirror or lean into a makeup mirror, you'll know the beautiful physics that's happening. You won't just be seeing a reflection, you'll be seeing a carefully controlled manipulation of light, all governed by one simple curve. Which kind of leaves you with one final thought. Now that you can see this, what other invisible physics is hiding in plain sight all around you? कभी चम्मच में अपनी शक्ल देखी है, कभी एकदम सीधी दिखती है तो कभी उल्टी। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो है घुमावदार शीशों यानी मिरर्स की बड़ी ही दिलचस्प फिजिक्स। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के रहस्य को सुलझाते हैं। हाँ, मतलब ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आता ही है कि आखिर एक मामूली से चम्मच में ऐसा क्या है जो हमारे रिफ्लेक्शन को ही पलट देता है। इसका जवाब विज्ञान के एक बड़े ही मजेदार सीक्रेट में छुपा है। और ये सिर्फ कोई पार्टी ट्रिक नहीं है। चम्मच का वो जो घुमाव है ना, वो असल में हमें एक ही चीज में दो बहुत ही खास तरह के शीशे दिखाता है। और बस यहीं से हमारा ये पूरा रहस्य सुलझना शुरू हो जाता है। देखिए, जो आम शीशे होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, सपाट। पर ये वाले वैसे नहीं होते। इनमें होता है एक कर्व, एक घुमाव। और सच कहूं तो यही घुमाव, यही वो असली वजह है जो आगे होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार है। तो मतलब एक ही चम्मच के अंदर दो दो शीशे छिपे हुए हैं। चम्मच का जो गहरा वाला हिस्सा है, कटोरी जैसा, वो है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। और जो उभरा हुआ पिछला हिस्सा है वो है उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। सोचिए, एक ही चीज पर दो बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेज। अच्छा, तो अब इन अजीबोगरीब रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए हमें रोशनी के कह सकते हैं कि कुछ सीक्रेट रूल्स को समझना होगा। वो नियम जो रोशनी तब फॉलो करती है जब वो इन घुमावदार सतहों से टकराती है। अब ये डायग्राम देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराने की बात नहीं है। इसे बस एक मैप समझिए। चलिए इसके कुछ खास पॉइंट्स को समझते हैं। ये जो P है यानी पोल, वो शीशे का बिल्कुल सेंटर है। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उस गोले का सेंटर जिसका ये शीशा एक टुकड़ा है। और सबसे जरूरी, ये F यानी प्रिंसिपल फोकस, ये वो जादुई पॉइंट है जहां सारी रोशनी आकर मिलती है। यही फोकस पॉइंट F समझ लीजिए कि इस पूरी कहानी का हीरो है। यही वो पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी, छोटी बनेगी या बड़ी। सब कुछ इसी एक पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो फिर ये पूरा खेल बदलता कैसे है? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे बस इस फोकस पॉइंट F के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे होने से इमेज पूरी तरह से, मेरा मतलब है कंप्लीटली बदल जाती है।
और ये रहा हमारे चम्मच वाले रहस्य का जवाब। जरा बाईं तरफ वाले डायग्राम को देखिए। ऑब्जेक्ट को F पॉइंट से दूर रखा गया है और रिजल्ट इमेज उल्टी बन रही है। अब दाईं तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट को F पॉइंट के अंदर ले आए हैं और देखिए इमेज सीधी हो गई। बस एग्जैक्टली यही चम्मच में होता है। एकदम सही। जब कोई चम्मच को चेहरे से दूर रखता है तो चेहरा फोकल पॉइंट से बाहर होता है और नतीजा अपनी ही उल्टी शक्ल दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही चम्मच को आंख के बिल्कुल पास लाया जाता है, चेहरा फोकल पॉइंट के अंदर आ जाता है और फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, इमेज सीधी और बड़ी हो जाती है। पता है, इसी प्रिंसिपल पर तो शेविंग मिरर्स काम करते हैं। ये केबल एक तरह से चीट शीट जैसी है। ये हमें एक ही जगह पर सब कुछ बता देती है। गौर कीजिए कि कैसे ऑब्जेक्ट को F और C के बीच रखने पर इमेज बड़ी बनती है। मतलब ये सब कुछ पहले से तय होता है, फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से। अच्छा, तो चम्मच के गहरे हिस्से का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन चम्मच के पिछले उभरे हुए हिस्से का क्या? और हाँ, हमारी गाड़ियों के साइड मिरर का क्या, जिन पर वो एक वार्निंग भी लिखी होती है? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर्स का नियम ना बहुत सीधा साधा है। इस डायग्राम में देखिए, रोशनी की किरणें फैल रही हैं, वो असल में कभी मिलती ही नहीं और इसीलिए इमेज हमेशा सीधी और छोटी बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो। और बस यही कारण है कि गाड़ियों के रियर व्यू मिरर ऐसे बनाए जाते हैं। छोटी इमेज का मतलब है कि ज्यादा बड़ा एरिया शीशे में दिखेगा, यानी पीछे का ज्यादा ट्रैफिक। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। चीजें असल में जितनी पास होती हैं उससे ज्यादा दूर लगती हैं, इसीलिए उन मिरर्स पर वो वार्निंग लिखी होती है। तो चम्मच और कार के शीशों के पीछे का साइंस तो अब हम समझ गए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि यही प्रिंसिपल हमारी दुनिया में और कहां-कहां काम आ रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल्स हर जगह हैं। शेविंग मिरर से लेकर डॉक्टर के हेड मिरर तक, कार की हेडलाइट से लेकर बड़ी-बड़ी दूरबीनों तक जिनसे हम तारों को देखते हैं, और दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक। सोचिए, एक डेंटिस्ट से लेकर एक एस्ट्रोनॉमर तक सब एक ही फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो देखा, सिर्फ दो तरह के गोलीय दर्पण, एक जो रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है और दूसरा जो उसे चारों तरफ फैला देता है। बस इन्हीं दो सिंपल आइडिया से कितने सारे कमाल के और काम के इफेक्ट्स पैदा होते हैं। अगर एक शीशे का छोटा सा घुमाव ये तय कर सकता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, तो सोचिए जरा हमारे आसपास और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य घुमाव या कर्व्स होंगे जो हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को शेप दे रहे होंगे। विज्ञान वाकई हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।